Welcome to third part of third session of PHP. In this part, we'll discuss about PHP loops, especially about while loop. We have discussed about for loop earlier also. So we'll discuss about while loop. We'll also try to understand the error logs. We'll try to find out that what kind of errors can come and what actually the errors are saying. So let's move on to our PHP server, and then we start this coding part. So I am starting again the prime number program. So let's move vim prime.php, and now what is the change is we don't have to use the for loop here. What we are going to do is we are going to use while loop. So our for loop is starting from here. I'm just closing this part using comments, or what you can do is you can just remove these lines. So 5 lines are there. Sorry, 4 lines are there, so you can remove it by 4 okay. Now what we have to do is we have to do the same thing with the help of while. So here what we have to do, I have to define a variable. I have taken 2 I equal to 2. Now while $i is less than $n, what I have to do, I have to perform the looping function, and here if $i is less than $n, now what happens, sorry, if $n modulus $i is equal to 0, then what we have to do, we have to increment the factors. Now फैक्टर्स तो इंक्रीमेंट कर दिए, इसके अलावा आई को भी इंक्रीमेंट कर दिया. ठीक है, ये इतना करने के बाद अब अगर हम इस पेज को एग्जीक्यूट करके देखें तो वी विल फाइंड द सेम रिजल्ट दैट वी वर गेटिंग विद द हेल्प ऑफ फॉर लूप. लेट्स हैव अ लुक. Okay, just execute and just write here any number. For example, I am giving here 13. Okay, here you see that your while loop is executing and it is giving you that 13 is a prime number, and in the same manner if you want to check about 15, it will say that 15 is not a prime number, it is a composite number. Okay, now come on to error logs. That is, just write here cat /var /log /httpd /error_log pipeline grep and the page about which you want to check the error log. Okay, for example, I just want to check about prime.php. Okay, so you can see various statements written about this prime.php and various times also कि इस समय इसमें ये error आई थी. ठीक है, अब हम क्या करते हैं,
इस प्राइम नंबर के प्रोग्राम के अंदर एक छोटी सी एरर करके देखते हैं, ठीक है। व्हाट एरर आई कैन डू, मैंने सबसे पहले तो यहाँ इफ स्टेटमेंट के अंदर एक ब्रैकेट नहीं लगाया, गलती से सपोज़ मान लो इस सेट के बाद ये वाला ब्रैकेट छूट गया था, ठीक है। सो लेट्स सी व्हाट्स द एरर। फॉर दिस व्हाट यू हैव टू डू, एरर तो तब दिखेगी जब आपको एक बार पेज एग्जीक्यूट करोगे और उसके बाद आप उसको देखने की कोशिश करोगे, ठीक है। सो जस्ट एग्जीक्यूट द पेज एट वंस, just refresh, you will find that page is looking blank. That means there is some error, that's why the content after the error is not executing. Now come on to the cat statement, and here you see the last line is showing the current error, that is unexpected Brussels start in the file that you have selected, okay. And where the error has occurred, it is occurred at a specific system, that is 10.0.4.66, means किस क्लाइंट को एरर दिखी थी और क्या एरर दिखी थी, ये आप दोनों चीज़ें देख सकते हैं, ठीक है। सो आप क्लाइंट की कंप्लेन एक बार सुन लीजिए और उसकी कंप्लेन के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उस क्लाइंट को क्या एरर दिखी है, ठीक है, या कोई एरर क्यों दिखी है, ठीक है। Just go to the same line number, that is line number 11, press here I and just enter the bracket. Now I am again making another my purposely made error, and here what I am doing is I am missing semicolon. What should happen? Let's come to the web page. वेब पेज को आप रिफ़्रेश करेंगे तो आपको पता चलेगा कि नहीं, ये तो पूरा ब्लैंक आ रहा है। सो कंसोल पे आके जब दोबारा लॉग चेक करने जाएंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा दैट in the file that you are talking about there is error in line number 16, and what is the type of error? The type of error is there in semicolon. Actually it is looking for some semicolon, comma, or some other symbol is to be looked on to that place. यहाँ पे आपका सेमीकॉलन हो सकता है, कॉमा हो सकता है, या कुछ और हो सकता है, ठीक है। सो आप दोबारा से उस लाइन पे पहुँचिए, ठीक है। टू गो टू द लाइन नंबर व्हाट यू हैव टू डू, colon and then line number, and you can check that what actually is the problem, and you can find here that the problem is semicolon, okay. There is one more thing, आप PHP एप्लीकेशंस को चाहें तो कंसोल पे भी एग्जीक्यूट करके देख सकते हैं कि एरर क्या आ रही है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आई एम क्रिएटिंग हेयर अ टेस्ट फाइल, okay, and in this test file I am just writing a PHP $i equal to 1, and here what I want to do is print $i, but I have forgotten semicolon, okay. So write here PHP test.php, and you can find if there is some error it will not get executed. If there is no error it will automatically execute the application, okay. सो आप कमांड लाइन पे भी इस चीज़ को चेक कर सकते हैं दैट वेदर द PHP एप्लीकेशन इज़ एग्जीक्यूटिंग और नॉट एग्जीक्यूटिंग, ओके। अगर आप इसको वेब पे देखना चाहते हैं तो जस्ट कम हियर एंड राइट हियर test.php. You can find that the part which is correct
is executing, but there is an error in. Come to logs part, and the name of file was test. So here you find that it is saying that there is some error in line number 4. So if you go to the line number 4, you will find that the semicolon is missing. Here you see that semicolon is missing. It is saying line number 4 because आप semicolon यहाँ भी लगा दें तो भी चलेगा, ठीक है. It is not mandatory that you have to put semicolon here only. You can put it here. You can put anywhere just below this before starting next statement. Okay. And you can see the page is running on the web browser properly. Now, the second kind of log that we can use for our purposes is that access log. एक्सेस लॉग से हमें पता चलता है कि कब और किसने किस वेब ब्राउज़र से हमारे पेज को एक्सेस करने की कोशिश की. सो टू चेक द एक्सेस लॉग, जस्ट राइट हियर vim/var/log/httpd/access_log pipeline grep and then name of your application, that is PHP demo. Okay, just press enter. So it's not giving any output onto the vim, so you can see the output onto the terminal only. And vim हटा दीजिए. vim पे नहीं देगा because the size of the output is high, so you can use cat. And here you see that there are multiple lines related to this. ठीक है, इसने बताया कि किस वेब ब्राउज़र से एक्सेस किया गया है. जैसे here you can see Mozilla 4.0 compatible with MSI 7.0 on Windows NT platform, Windows NT 6.1 platform, and here you can see Trident 5.0 and what the languages supported by the system, that is a Media Center PC and all. So it is all the specification of the web browser that we were using is Internet Explorer 7.0, and it has all these features embedded inside this. Okay, सो आपको पता चल जाता है कि क्लाइंट ने आपका कौन सा पेज एक्सेस किया है और किस मेथड से एक्सेस किया है. ठीक है, कोई वैल्यू अगर पोस्ट मेथड से सेंड की है आपके पास तो वो पोस्ट मेथड भी पता चलेगा. गेट से भेजी है तो गेट भी पता चलेगा. दूसरी बात, क्लाइंट का आईपी एड्रेस भी आपको पता चलेगा. जैसे हियर यू कैन सी 10.0.4.66 इज़ द क्लाइंट एड्रेस and the client has accessed the application on 21st September 2012 at 13:20. Okay, now if you want to check the time, just write here date command and you can see that it has accessed just 4 minutes ago. 4 मिनट पहले इसने ये चेक किया था. So in this way you can check that what actually is happening and कौन सा यूज़र आपके किस पेज को कितनी बार विजिट करता है. That means you can check the hit counts also. Okay, now with all this there is an activity for you. You have to design a web page that basically creates the table of a given number. User is giving some number and आपका पेज जो है एक टेबल रिज़ल्ट करता है. जैसे 5 दिया तो 5 का टेबल प्रिंट हो जाए, 6 दिया तो 6 का टेबल प्रिंट हो जाए. ठीक है, एंड सेकेंड थिंग,
The second question is what you have to do is you have to ask some numbers from the user side and in different subjects and आपको जो है डिफाइन करना है कि इस सब्जेक्ट में आपका ग्रेड क्या होगा. ठीक है, ग्रेड यू नो दैट इट शुड बी A for 75 and above, it should be B for 60 to 75, it should be C for 50 to 60, D for 40 to 50, and E for fail. Okay, so you have to mention all these 4-5 categories. So in this way you have to display the grades of a student. That's all for now. Thank you.